दादा, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आज सुप्रिया जी से गाइड हो रही हैं क्या? सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये समझते हैं बुढ़ा आदमी बोल रहा है, इसको मदद किया जाए। ये सब लोग मदद कर रहे हैं। जो किया वो बोलना आपका काम है, जो नहीं किया वो मेरा काम। सर, माननीय स्पीकर साहब, दादा को नवनीत जी ने नमस्ते नहीं किया, इसलिए उन्होंने सुप्रिया जी का सहारा ले लिया। Shekhawat doing namaskar to me. I like that. He is the favorite child. Oh, he did namaskar to you. And Navneet must have been. That would be only more proper. I rise to speak on the budget discussions. It is very unfortunate that yesterday also budget discussions took place. Today it is taking place. The finance minister has not been present on either occasion. The budget discussions belong to the Lok Sabha. Rajya Sabha has no power. I understand the finance minister is from the Rajya Sabha. Why isn't she there either of the day? What is he talking about? आज प्रधानमंत्री जी का डे है वहाँ क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, इसलिए जितने भी मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो वहाँ प्रेजेंट हैं क्वेश्चन डे के कारण। वो आ रहे हैं, वो दोनों फाइनेंस मिनिस्टर। आप ये बताओ, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, ये मत कहो जवाब। behalf of finance minister, I am sitting here. She is in Rajya Sabha. Honorable Prime Minister is there. includes the minister. नहीं रहते हैं। दूसरी बात है सर, the other minister, railway minister, whose budget also comes up on this, he is also not there. These are all big people. They don't care. Otherwise, Lok Sabha has full power as far as budgets are concerned. दोनों नहीं है। ये मजाक है क्या? सारे मंत्रालय का बजट इस बजट में आता है सर। नहीं। Railway minister should be present to listen to our objections. Sir, I speak on the budget discussion. Before I go to my main demands, I want to mention 2 points regarding our state of West Bengal. The West Bengal has been deprived of its share of NREGS funds. 7,300 crores are spending from the center. Along with Sudhir Bandyopadhyay, we all went and met the rural development minister. Our local minister went and met him. He said everything is all right. Still money is not being released. He also belonged to a rural area. Just imagine the situation in the rural economy. If total NREGS funds are stopped, people will be starving. And this is... माननीय सदस्य, या तो आप गोली को रख दो, जो हाथ में गोली फाड़ी है ना आपने। नहीं, ये तो हाँ, एलेक्स है। ठीक रखने, गला ठीक रखने। पानी देता हूँ आपको ना, गर्म पानी। प्रधानमंत्री जी के तरह वो तो पानी पीते हैं, मैं एलेक्स खाता हूँ, गर्म पानी। हाँ। ऐसे गैलेक्स खाना, गोली खाना सदन में अलाउ नहीं है। सर, मैं this is for the health, sir. For health. Now, I demand that the money for NREGS for West Bengal should be released immediately. And the government should give up its cruel attitude. Number 2, I have to speak something about railways. The finance minister made a big hue and cry that he has given 11,000 crores to West Bengal for unfinished projects. But nothing is finishing. He will earn name as a railway minister who's very smart. He is starting Vande Bharat trains so that PM can go and inaugurate. These have no long-term benefits. And in West Calcutta metro system, he is inaugurating truncated lines. That is, there is a line from Behala to Bibadibag. He goes 1/3 and inaugurates up to Joka to Taratala. So I demand that whatever railway projects he is doing, let him complete them instead of inaugurating truncated lines. Sir, I wanted to speak on the budget.
Nirmala Sitharaman herself called her budget beautifully balanced. I have never heard a finance minister praise her own budget. She is saying India said to be $5 trillion economy, budget beautifully balanced. I'll talk about the balance later. But it's unfortunate that the finance minister budget speech does not mention the words unemployment, poverty, inequality, inflation, or equity anywhere in the speech. So even if it is beautifully balanced, it is that of an accountant. This budget has no vision about the future, and it is not futuristic but opportunistic, anti-people and anti-poor. This is what Mamata Banerjee said about the budget. Sir, unfortunately, as soon as the finance minister presented his budget, the next day an avalanche took place. Avalanche of what? Hindenburg research report. One short-selling firm from America, they released a report about a company in India. I will not name the name. Sir, when we were small, after sunset, we could not use the word sap. My mother used to say, don't say sap, say lata, lata. So now there is a new word. We cannot mention somebody's name. We have to a company, this company. But this company is everything. We can't mention the name. Just like my mother told me when I was young, living in a village. Snake we could not mention. If 353 nowhere permit you, then you can't mention it. Either you get... You have become the new spokesman for the ruling party to prevent the opposition protest. You have become the new spokesman after being dropped from the ministry. You have started explaining everything. Go back to the ministry. chairman of the Jan Vibhag and chairman of Jan Vibhag. अरे आप इधर बात the new way. आप बात है ना मान्य सदस्य इधर करा करो कोई नियम हो तो इधर बताओ उनको क्यों नियम बता रहे हो भाई? Some professional hecklers have sprung up. Their job is to disturb the opposition whenever they speak. Right. I cannot take concern about them. Now, sir, I'll be very brief on this matter. I have other things to speak about. The Hindenburg research report said that a certain company did round-tripping of its finances, and they bought up assets in India after round-tripping them from abroad. After that, an avalanche. You know, in the snowy areas, the ice comes down. The ice came down on this company's shares. In 3 days, it lost 10 lakh crores of rupees. Now, if ये कौन सी कंपनी आप लोग बताओ इसका नाम तो नहीं किया जाए, साफ है. तो अरे हमारा कोई डर नहीं है. अदानी बोलने से ये लोग बोलेगा काट दीजिए, उनका नाम नहीं करना चाहिए, ये साफ है. तो सर, I have a simple demand before the finance minister. She has got the SEBI under it. If a company has done round tripping, it is the job of SEBI to look into it. I demand that she ask the SEBI to inquire into fallen shares of this certain company. Also, the Enforcement Directorate, ED, matter of fear for the opposition, is also under the finance minister. They are investigating each and every opposition politician. Why the ED is not investigating the affairs of this company? Because he is not in the opposition. This is... He is not in opposition. He is not in opposition. Yes, very right. Lalanji is first-class leader from Bihar, president of the JDU. He is supporting me, and I thank him for the same. So now, I'll call this budget
basically an anti-farmer, anti-poor, anti-rural areas budget. You know what they've done? They've reduced allocation for MG NREGA. क्या है? क्या? तुम्हारा डिवोर्स हो गया? आप माननीय सदस्य डिस्टर्ब हाँ। अच्छा ठीक है। Sir, there has been reduction in the allocation of MG NREGA and cut in food, fertilizer and petroleum subsidies. This is anti-poor. Sir, you will know that food subsidy has been cut from 2.87 lakh. Sir, what is it that I am saying that is objectionable? Please. This young man is shouting. Please. He is shouting. Please. You put him down, sir. Food subsidy has been cut from rupees 2.87 lakh crores to rupees 1.97 lakh crores. Fertilizer subsidy has been cut from rupees 2.25 lakh crores to 1.75 lakh crores. These cuts will expose Indian farmers to the vagaries of the global market and render the economics of agriculture even more fragile. This is a very serious matter. This should be looked into. Sir, what were you expecting? I was actually originally thinking of praising the finance minister because she has called herself the budget is beautifully balanced. So I thought that yes, it's balanced, but his balance is that of an accountant. You know, in the finance ministry, there is a deputy secretary who tallies the budget and he ultimately balances both sides. The finance minister has done just that. This was the opportunity when inflation was under control, GDP was rising, current account balance was better, fiscal deficit was under control. This was the time to take a big step forward. What did Abhijit Vinayak Banerjee say at the time of pandemic? He said that give some cash dole in the hands of the poor. The budget does not mention anywhere the word migrant labor, who were the biggest Achilles heel of the Indian economy. People walking hundreds of miles to their destination when the pandemic broke. They have not been mentioned. The top economists of the world wanted them to be given some cash dole, some money. The finance minister did not. The other thing she could have done in a stable macroeconomic situation, she could have reduced the prices of petrol, diesel, and of LPG. Because if you have a little financial space, that is the time to give relief to the common man. She did not do this because she had to balance the budget beautifully. So this budget ultimately turned out to be what? Anti-poor. Anti-poor people. So that is the budget. So now you are talking about digital India. Now digital India is all right. But sir, you must be knowing that technology takes away jobs. Today, all the big tech companies like Microsoft, Meta, Amazon, they are all retrenching people. They are called pink slips in America because technology always relentlessly takes away jobs. So to talk about digital India, Industrial Revolution 4.0, artificial intelligence, 3 centers will not solve India's problem. India's basic problems are poverty,
destitution, migrant labor, and of course unemployment. The employment has not been addressed at all. The finance minister will come and say, see, I have increased so much in capex. Capex is what? Capital expenditure. How much she has given? 10 lakh crores. Very big sum. But does the capex get translated into projects anywhere? No. You give the money today, the project will take another 1 year, 2 years to start. What happens in the meantime? And when you are building infrastructure projects, the main problem is that they take lot of time. Some people get employment during construction. But after construction is over, they lose the jobs. So you are taking India towards a jobless future. From a very favorable situation, you are taking India to a jobless future, berojgar. I see Mr. Gajendra Singh Shekhawat doing namaskar to me. I like that. He is the favored child. Oh, he did namaskar to you. And Navneet must have been. That would be only more proper. Sir, there are only two favored children. Who are favored children? One is this Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission. They have got 70,000 crores. And the other is PM Awas Yojana. They have got 79,000 crores. But NREGA has received a cut. So if you develop only two projects, that will be enough to alleviate India's problems. I do not think so. I think you are making a mistake. सुनिए ना आप जो किए हैं मेरे पास ये है आप क्या क्या किए हैं जो नहीं किया है वो बोलना मेरा काम है जो किया है वो बोलना आपका काम है जो बोला है सुनो हाँ दादा आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आज सुप्रिया जी से गाइड हो रही हैं क्या? सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये समझते हैं बुढ़ा आदमी बोल रहा है इसको मदद किया जाए, ये सब लोग मदद कर रहे हैं। जो किया वो बोलना आपका काम है, जो नहीं किया वो मेरा काम। सर माननीय स्पीकर साहब, दादा को नवनीत जी ने नमस्ते नहीं किया इसलिए उन्होंने सुप्रिया जी का सहारा ले लिया। Sir, the other thing is, do you remember? ये प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया फार्मर्स इनकम 2022 में दुगुना हो जाएगा। आपको कोटा में भी तो फार्मर है, उनका इनकम दोगुना हुआ नहीं हुआ। सर, they promised that by 2020 everybody will have a house. Everybody. कहाँ सब लोग का घर हुआ? आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्वरोजगार योजना, उसमें सब लोग का घर मिल जाएगा, घर नहीं मिला। सर, ये जुमला का सरकार है, एक साल एक सवाल उठाते हैं, एक साल। अच्छा सर इसको तार कट गया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको तार कट गया। सर, लास्ट ईयर they made a promise asset monetization pipeline that they will get money out of the एक सेकंड माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, किसी भी माननीय सदस्य के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग मत करो। आपको वो करेंगे तो उनको भी इसी भाषा में कहूंगा। उनका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।
उनका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नहीं रोक नहीं, मैंने कह दिया उनको बैठ जाइए, आप बोलिए। सर आपको नहीं अलाउ किया मैंने। लास्ट ईयर दे स्पोक ऑफ, प्लीज दे स्पोक अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस साल है बजट में? नहीं, कुछ एसेट मोनेटाइज नहीं हुआ। दे यूज्ड टू स्पीक अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट। अगले साल भी 50,000 करोड़ था, इस साल भी 50,000 करोड़ बजट में। कभी कोई आपका एसेट लेने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। योर प्रोग्राम्स आर फेलिंग वन बाय वन। अनाउंस Nirmala Sitharaman has this advantage. She makes an announcement, forgets about it next year. But we keep last year's budget. We remember what all she said. And that's why, sir, this budget, done with good intentions, at a time when Indian economy was recovering from the downslide of the COVID, missed all the opportunities. It turned out to be, I'll briefly complete my point, sir. बहुत डिस्टर्ब कर दिया वो और हमको डिस्टर्ब करता है। सर अच्छा, कल अधीर चौधरी गलवान के बारे में बोला कि चाइना कितना पॉइंट गलवान में दखल किया, कितना पॉइंट अरुणाचल में दखल किया। क्या जरूरत था डिफेंस बजट बढ़ाने का? कहां बढ़ा? 1.5%. इट हैज रिमेन ऑलमोस्ट द सेम इफ यू टेक इन इन्फ्लेशन। अभी तक छत्तीसगढ़ में माओवादी लोगों को मार रहा है। एक बीजेपी को आदमी को मार दिया परसों। कहां सीआरपीएफ का अलॉटमेंट? वो भी नहीं बढ़ा, 1.5%। ये लोग बोलता है हेल्थ और एजुकेशन में पैसा देगा। एजुकेशन में केवल 2.9% सारा बजट का अलॉटमेंट एजुकेशन के लिए। हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है, वहां भी कोई अलॉटमेंट नहीं है। लास्टली आई वांट टू से दैट गिविंग एलोकेशन इज नॉट इनफ। इन आवर कंट्री यू हैव टू सी दैट ऑन द ग्राउंड प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड। Government has spent 22,000 crore less of what it had allocated for capital expenditure this fiscal. Allocating money is not equal to spending money, nor is allocating money equal to creating jobs. They have mentioned all yet they have. Sir, आप सुनिए, सर आप सुनिए, कुछ प्रोजेक्ट का मेंशन किया, कुछ प्रोजेक्ट का मेंशन किया। आप ये प्रोजेक्ट, इसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया। सर क्या भाई, क्या प्लीज मानिए। सर ये क्या हो रहा है? ये एक तो प्रॉब्लम होगा। अभी भी हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी एंड एफडीआई दे कॉन्स्टिट्यूट 40%. Since last year, FDI is escaping from the economy. You find out how much FDI money has gone out. Private investment is being squeezed out because the government is doing huge borrowings. So the private sector is not being able to mop up resources. So this point that I'm giving everything to CapEx, I'm creating a deficit financing that creates a problem. ये देखिए अनाउंसमेंट किया कुछ प्रोजेक्ट का, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, पीएम प्रणाम, गोबर धन, खेती, नेचुरल खेती, बायो इनपुट, मिष्टी, ये मैंग्रोव के लिए है, अच्छा है, अमृत धरोहर, इवन मिलेट्स। सर एक पैसा भी अलॉट नहीं किया।
केवल फिनांस मिनिस्टर ये बजट स्पीच में अनाउंसमेंट किया, बजट पेपर्स में इसका कोई मेंशन नहीं है। पीएम प्रणाम, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, गोवर्धन, नेचुरल खेती। और ये नेचुरल खेती क्या होता है सर? इसका कोई, आप गोवर्धन के पक्ष में है कि गोवर्धन, बिल्कुल गोवर्धन योजना इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, और उसके लिए जो है 7,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन नहीं, यू शो मी द बजट पेपर। आई एम कैरिंग ऑल द बजट पेपर। आप दिखाओ कहाँ एलोकेशन। आई एम कैरिंग द बजट पेपर। शो दिस आर ऑल अनाउंसमेंट्स विदाउट एनी मीनिंग। सो दिस इज ऑल चीटिंग, फजलिंग, बिफडलिंग। हाँ, ये सब वैलेंटाइंस डे प्रेजेंट है। सर, लास्टली आई वांट टू से दैट आप देखिए, एक तो बजट पेपर में एक तो अच्छा पिक्चर है। हमारा रुपया कहाँ से आता है? हमारा रुपया इनकम टैक्स 15%, एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%, जीएसटी 17%। तो आप इनकम टैक्स आप छूट दिया कितना? 0.1%। 38,000 करोड़ रुपया हमारा इनकम टैक्स, टोटल हमारा कलेक्शन जो है 25 लाख करोड़, उसका 1% है। ये कोई छूट नहीं है। और आप क्यों बड़े लोगों को सरचार्ज पर छूट दिया? वो देना नहीं चाहिए था, गलत किया। ये बजट इज टिंकरिंग। एक गवर्नमेंट 2 साल पहले एक तो अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया, उसमें थोड़ा सा इधर उधर करता है। ये भी बजट इकोनॉमी को लेकर टिंकरिंग किया। और देखिए, डिफेंस इज ओनली 8%, सब्सिडीज कम करके 7% कर दिया, स्टेट शेयर 18%। एक ही अच्छा काम हुआ, 50 साल के लिए स्टेट्स को 1 लाख करोड़ रुपया लोन दिया बिना इंटरेस्ट में। अच्छा है। स्टेट को 3.5% फिस्कल डेफिसिट अलाउ किया, ठीक है। लेकिन ये है समय जब इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है। यही समय था टू मेक ए फ्रंटल अटैक ऑन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी अगर स्टेबल है तो आप गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाओ, अपना दल भी स्ट्रांग होगा। आप भी करो अनुप्रिया जी, ये उसका ये मत रहो पैसा। सर, ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, ये देश को लूटेगा, ये कुछ नहीं करेगा सर। आप और हमको गरीब के साथ रह के लड़ाई लड़ना है। और इसलिए मैं ये बजट प्रस्ताव को समर्थन नहीं पा रहा हूं। मैं फिर मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल का एनआरईजीए का रुपया अभी देना चाहिए, और पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना के रुपया अभी देना चाहिए। और रेलवे मिनिस्टर कलकत्ता जाए और हमारा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को इनागुरेट करे। मैं बहुत आभारी हूं कि आप धीरज के साथ मेरे भाषण सुने। मैं आपको नमस्कार।